देखो रजा, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो आज का। जर्नल से कल डिस्कस कर लिया थी, ठीक है। न्यू पार्टनर आऊंगा, कैपिटल लेके आऊंगा एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आऊंगा। सो एंट्री वाज कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जेडी गुडविल आई वो ओल्ड फर्म्स का आ गई, कितनी आई? इक्वल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो गुडविल मिलने की ना ओल्ड फर्म्स, ओल्ड पार्टनर्स इन द sacrificing ratio. Why? Because goodwill is the compensation against share of profit. Next example लिखो। देखो A is to B ratio 2 is to 5. C was admitted for 1/4 share. C the share 1/4. C brings rupees 14,000 as his share of goodwill. As his share of goodwill. Calculate new ratio and pass journal entries. बोलो पहली चीज, न्यू रेशियो ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ? ओल्ड रेशियो मिली, न्यू पार्टनर ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਈਪ 1। ਟਾਈਪ 1 ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲਿਖੋ ਜਲਦੀ, ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ। ਲੈਟਸ ਗੋ। let total profits be 1. C's share is C's share is 1/4. Remaining share 1 minus 1/4, that is 3/4. This 3/4 will be distributed between A and B in the ratio 2 is to 5. Now 3/4, 3/4 multiply by 2/7, 5/7. So 6/28, 15/28. ठीक है? Yes or no? Third partner C. C का शेयर 1/4। बेस सेम कितना करोगे? 7/7। तो इट कम्स आउट टू 7/28। जितना ही बेस सेम होया, न्यूमरेटर का टोटल शुड बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। लेट्स चेक। न्यू रेशियो आई A is to B is to C 6 is to 15 is to 7। चेक करो 6 और 15 कितना होता? 21 प्लस 7 28। हो गया मैच? तो न्यू रेशियो इज डन। नेक्स्ट वर्क, पहला सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, कई बच्चे कहते बट गुडविल की अगर एंट्री पानी तो SR इज रिक्वायर्ड। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। So sacrificing ratio will find for A and B. A's old ratio was, it was 2 is to 5 है ना, so 2/7, 5/7 minus 6/28, 15/28. LCM is 28. 8 minus 6, 2/28. 20 minus 15, 5/28. So the SR is A is to B, 2 is to 5.
Clear? Yes or no? After this, we have to move to journals. Journals से जान ली पहली गल इस क्वेश्चन ने कैपिटल्स का गिवन ही नहीं है. न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, सो इग्नोर दैट. फर्स्ट एंट्री कल की पड़ी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. कैपिटल नहीं गिवन तो छाड़ दो. फर्स्ट एंट्री सिर्फ कितनी बची? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड सेकंड एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. उन्ना कम तो हो जाऊगा. नाउ द पॉइंट इज गुडविल इतने केड़ी चाहिए, उस पार्टनर दी या फर्म दी? उस पार्टनर दी, एडमिटिंग पार्टनर दी. कल सानू क्वेश्चन च गिवन सी गुडविल ऑफ द फर्म, सो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ? ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ. ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਫਰਮ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈ? ਤੀ ਦੀ ਹੈ. ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਗੁਡਵਿਲ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ गिवन. यस और नो? सो कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्टली वी कैन जंप टू द जर्नल एंट्रीज. तो मेक द जर्नल. कितनी जर्नल एंट्रीज आओगी? तो मेक द जर्नल. तो हेडिंग लिखोगे जर्नल, फॉर्मेट इज सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. तो फर्स्ट जर्नल विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. हाउ मच? 14,000. Second journal entry is distribute this premium for goodwill among the old part. So premium for goodwill debit to old partners in the sacrificing ratio. Sacrificing is 2:5. So we'll write to A's capital to B's capital. $14,000 in the sacrificing ratio. Sacrificing ratio is 2:5. So divided with 7. Can I 2,000? 2,000 into 2. 4 and into 5. Okay, yes or no? और न्यू रेशियो दी टाइप केड़ी सी? टाइप 1. टाइप 1 ओल्ड एंड एसआर इज सेम. चेक करो, हाई सेम. ओल्ड वाज 2:5. sacrificing ratio was also 2:5. वेरीफाई हो रही चीज? अच्छा, इसी क्वेश्चन नाल देखो नरेशन की आओगी फर्स्ट एंट्री दी. being goodwill brought by new part. फर्स्ट एंट्री यही काम किया, यस और नो? सेकंड की किया? डिस्ट्रीब्यूट की ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. लिख दो. being the goodwill distributed in the sacrificing ratio. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट एग्जाम. B and C 3:2. D is admitted for 1/4 share. D brings rupees
20,000 as premium for goodwill. ये सेम क्वेश्चन है। अच्छा उन्हें तो एक और चीज सुनो, इस क्वेश्चन तो उन्होंने क्या पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। पहली चीज कैपिटल गिवन है कितने, नहीं, मतलब एंट्री सिर्फ गुडविल दिया नहीं, फर्स्ट भी सेकंड भी, ठीक है। सेकंड थिंग, न्यू रेशियो की केड़ी टाइप है, वन। न्यू रेशियो पूछी कितने क्वेश्चन ने, नहीं पूछी, क्वेश्चन ने सिर्फ पूछी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज तो केड़ी रेशियो चाहिए, सेक्रीफाइसिंग, और टाइप वन सेक्रीफाइसिंग की आंदी सेम एज ओल्ड, सॉल्विंग नहीं चाहिए, डायरेक्टली जर्नल, गेटिंग दैट। पर एसआर द शो कर दोगे कि इन दिस केस द सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी सेम एज ओल्ड रेशियो, दैट इज बी टू सी 3 इन अली, ठीक है। लिखो स्टार बार, इन द गिवन केस द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, क्योंकि टाइप नंबर 1 2 3 वो ਅਸੀਂ खुद लिखा है, तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ पता लग गया टाइप वन, एक्सप्लेन इधर लिखो। इन द गिवन केस sacrificing ratio will be same as old ratio, that is b is to c 3 is to 2। yes or no, पर्पस की रह गया सिर्फ जर्नल एंट्रीज। जर्नल शॉर्ट्स मैंने दसो ਤੁਸੀਂ प्रॉपर पाई हो सारी। पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट हो डी, सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल हाउ मच, 20,000। एंड सेकंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कितनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 3:2 मीन्स डिवाइड बाय 5। कितना आया 5 ने डिवाइड करके 4,000, 4 3 12, 4 2 8, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यस और नो, करो प्रॉपर फॉर्मेट का। नेक्स्ट लिखो एग्जांपल, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, डी brings rupees 21,000 as premium and 1/4 ना लिखे which he takes from B 1/6 and from C 1/12। केड़ी टाइप होगी, टाइप 3 होगी, ठीक है। ऐसा नो, फ्रॉम नाल के दिता शेयर्स, सो इट्स टाइप 3। तो बोलो पहली चीज। अच्छा इतने भी क्वेश्चन ने ਤੁਹਾਨੂੰ क्या पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, ध्यान ਨਾਲ सुनो की करना ਤੁਸੀਂ, जर्नल एंट्री। न्यू रेशियो पूछी कितने क्वेश्चन ने, नहीं पूछी, की पूछया जर्नल, जर्नल ਲਈ कैपिटल तक गिवन नहीं है, दिमाग लगाना गुडविल वाले पोर्शन से। गुडविल की एंट्री पहली आनी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी एंड सी कैपिटल इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब रेशियोस वी नीड ओनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वी नीड ओनली सेक्रीफाइसिंग। एंड सेक्रीफाइसिंग नॉर्मली कितों मिलती, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू सानू पूछी नहीं है। अगर मैंने कोई शॉर्टकट मिल जाए तो मैं न्यू रेशियो कैलकुलेशन तो बच सकता, शॉर्टकट कितों की मिलता है इस टाइप, सानू क्लियरली गिवन है कि फ्रॉम बी कितना शेयर मिले, 1/6।
एंड फ्रॉम सी कितना मिले 1/12 ਦੱਸਿਆ B ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1/6 C ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 1/12 ਜਸਟ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਕਰੋ base same कर so now I got 2/12 from B and 1/12 from C अगर B तो मैंने 2/12 मिले और C तो मैंने 1/12 मिले मींस उन्होंने दिता भी की है उन्हें 2/12 उन्हें 1/12 मींस उन्होंने SR की हुई 2:1 हो गई ना सवारे टाइप 3 च डायरेक्टली SR इथों मिल जाती बेस सेम चाहिए बट ये ध्यान रख बेस सेम चाहिए टाइप 4 की सी टाइप 4 से इतने वैसी रेशियो लिखी होती है फ्रॉम B एंड C इन दिस रेशियो वो SR ही होती है टाइप 4 च क्वेश्चन ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ और टाइप 3 च ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਗਿਵਨ ਆ ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਈਓ ਬੇਸ same got it this new ratio is now not required because SR ਸਾਨੂੰ directly इथों मिल रही you getting that मन पे समझे बच्चा सो की करिए D got from B 2/12 from C 1/12 so sacrificing ratio की आगे 2:1 डायरेक्टली मिल गया तो सर जर्नल की आओगी शॉर्ट्स दसो मैंने फर्स्ट एंट्री विल बी cash account debit to premium for goodwill how much 21,000 and second will be premium for goodwill account debit to B's capital to C's capital in the sacrificing ratio 21,000 the SR given है 2:1 2:1 means total 3 3 ना divide करो 3 ना divide करके क्या आंदा 7 तो 7 2s are 14 and 7 1s are 7 हो गया काम समझ रहे तो खुद अपने कंसेप्ट क्लियर रखने पैने अगर तुसी कोई शॉर्टकट लगाना तो सॉल्व इट क्लियरली हरी ऑनलाइन क्लियर बच्चा देखो राजा नेक्स्ट A and B 3:2 C was admitted the new ratio of ABC was 5:3:2 already given C brought rupees 25,000 for her share of goodwill past necessary entry हो जाओगे क्वेश्चन फ्री था ओल्ड रेशियो गिवन न्यू गिवन SR फाइंड हो जाओगे यस और नो और फर्स्ट एंट्री कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू A and B's कैपिटल इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाओगा सिंपल SR ਤੁਸੀਂ फाइंड कर लेनी जगह रखो ये कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन A is to B 3:2 C was admitted for 1/4 share goodwill of the firm was valued at 3 years purchase of super profits कि पिछले लेसन का टचअप आ गया ना
सुपर प्रॉफिट्स, फुल स्टॉप. एवरेज नेट प्रॉफिट्स of the firm was rupees 20,000. Full stop. Capital invested in the business was rupees 50,000. NRR was 10%. Pass necessary entries for goodwill. 2 मिनट सुनियो. गुडविल फाइंड करनी सुपर प्रॉफिट ना. तो फर्स्ट स्टेप विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों पता 50,000. स्टेप 2 विल बी नॉर्मल प्रॉफिट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 10% कितना होगा 5,000 रुपीज. थर्ड स्टेप एवरेज प्रॉफिट ऐसी पड़ेगा 20,000. 20 - 5 करके 15,000 आओगे सुपर प्रॉफिट्स. सुपर प्रॉफिट्स इनटू 3 years परचेज मतलब गुडविल आई रुपीज 45,000 आई फर्म दी. तो आगे पिछले क्वेश्चन तो आ जाओगे से 45,000 से सीधा शेयर लगाओगे 1/4. यू विल गेट द सी शेयर ऑफ गुडविल. अगे गुडविल दी एंट्री और सेक्रीफाइस. गॉट इट यस और नो. पिछला और ये चैप्टर था कॉम्बिनेशन मिल गया सुपर प्रॉफिट मेथड ना. कैन यू डू नाउ. करो जल्दी.